हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम सॉलिड स्टेट स्टडी कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट में हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। जैसे कि आप सभी जानते हो, सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। देन डेफिनेटली इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है। मतलब अगर किसी सॉलिड की बात करें तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस कम होगा, वाइड फ्रैक्शन कम होगा और वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी या क्लोज पैकिंग ज़्यादा होगी। सो देखते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। बेटा यूजुअली सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, यू नो, यूजुअली solids are closely packed। आप सभी जानते हो कि solids close packed होते हैं, having definite geometry। हमने पहले स्टडी की है और इनमें जो है स्मॉल यूनिट्स रिपीटेशन होती है, repetition of unit cells। Unit cells can be repeat in one dimension like wire। बहुत ही thin wires होते हैं, one dimensional unit cell packing। It may be two dimensional like a thin sheet। जितनी plain sheets होती है, you can say two dimensional solids। and then 3D, that is three dimensional। इसमें बेटा जो ब्लॉक्स हैं, ज्योमेट्रीज हैं, इस टाइप के सॉलिड्स। सो सॉलिड्स आर क्लोज पैक्ड। क्लोज पैकिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन थ्री वेज। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, लुक एट व्हाट इज वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वैसे तो बेटा ये कोई बहुत अच्छी पैकिंग नहीं है, it's not a very good packing, because in this packing spheres, that is the constituent particles, are packed or arranged only in one dimensions like this। Spheres are packed only in one dimension along one of the axis, maybe x-axis, y-axis, z-axis। This is the one dimension packing। We can say this is the packing in which constituent particles are arranged along one crystallographic axis, okay, and just like a very thin threads or wires। In this case, the coordination number you get 2, maximum coordination number is 2। That means maximum two spheres can be surrounded around one when the packed spheres or constituent particles, I am talking about constituent particle, that is the particles which are maybe atoms, maybe molecules, or maybe ions। So in one dimensional close packing, maximum coordination number is 2। But if we talk about two dimensional close packing, it's a 2D close packing। फिर जब कभी आपको कहा जाए you have to study or write about the two dimensional close packing or find out their packing efficiency, find out their coordination number, then we can say in this case two dimensional close packing, maybe spheres are arranged or aligned just one over another layer। Their centers are aligned in one line like this। These are the two crystallographic axes, maybe x-axis, y-axis। So this type of arrangement is called 2D close packing। Maybe two dimensional close packing also can be arranged like this way। A sphere is present in the voids of the two। This is the void, इन दोनों के void पे sphere placed करा है like this manner। You can observe that
this type of 2D closed pack along x-axis, along y-axis. बेटा इसमें जो स्फीयर्स हैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर कॉमनली अलाइंड होती है, सो दिस इज कॉल्ड ए टाइप पैकिंग in 2D. And in this type of packing you can see very clearly one sphere can touch maximum to the 4 1. So the coordination number of this type of packing is 4, and because this is the two-dimensional unit cell, its shape is square. It is also known as 2D square closed packing. अगर आपने 2 डायमेंशन में कोई चीज पैक्ड करनी है तो इस तरीका से कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. स्फीयर्स आर जस्ट पुटिंग अबव one of the another layer AAA like this, and its coordination number is 4. It is also known as AAA type packing. Well, if we talk about this 2-dimensional closed packing, this is the another way of the 2-dimensional closed packing. In this case you can see one sphere can touch maximum 6 spheres. So in this case the coordination number is found to be 6 1. But here if this layer is the A layer, then this is not a A, this is the different layer, say it B, but the third layer like just above the first layer. So this type of arrangement is known as AB 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 type repetitive arrangement. And because it's one unit cell, you can see this type of unit cell repeated thoroughly. इसमें स्क्वायर की रिपीटेशन है, इसमें इसकी रिपीटेशन है. दिस इज कॉल्ड 2D hexagonal close packing. In this case coordination number is 6 and it is known as ABAB arrangement. In this case coordination number is 4 and it is known as AAA arrangement. Both are 2-dimensional close packing of the spheres or constituent particles. Okay, now if we discuss about their packing fractions, question may be asked, very rarely, but in the competition may be asked to find out the packing fraction. Find out the packing fraction in 2-dimensional square close packing. Can be asked to find out packing fraction in 2D hexagonal close packing. As well as discuss about the type of voids formed. Types of voids formed. In this case, the type of void formed is this one. This is called square void. In this case, square void is formed. And in this case you can see clearly the type of void is formed as a triangle, upper triangle and lower triangle. These are the voids formed in the hexagonal close packing. इसके अलावा बेटा आप ये भी देखिए कि इसमें जो void है इसकी साइज कंपैरेटिवली लार्जर है. Void is the empty site. This is the void. It's an empty site. यहाँ पे ये चीजें वाइड्स हैं. इन दोनों के वाइड के कंपैरिजन कर लो तो इसका वाइड लार्जर है, इसका वाइड स्मॉलर है. सो वी कैन सी वेरी क्लियरली 2D hexagonal close packing. 2D hexagonal close packing is more efficiently packed than 2D square close packing. और वैसे भी बेटा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो वो ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है. अगर कभी आपको 2-डायमेंशनल में पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना हो, देन पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपने 3D में पढ़ा था, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यहाँ पे चेंज हो जाएगा. यहाँ पे आप बोलोगे द एरिया occupied by all the spheres, area occupied by all the spheres divided by the area of the unit cell.
और यहाँ पे भी जो एरिया है इट्स जस्ट लाइक अ क्रॉस सेक्शन एरिया. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, इन 1 यूनिट how many number of spheres are there? ये 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4, you know, in 2D 1/4 contribution and this is the full contribution. So 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, 2. ठीक है. किसी भी स्केल में अगर आपने क्लोज पैकिंग फाइंड करनी हो, स्केल में पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, तो आप समझते हो स्फीयर्स टच अलोंग द साइड्स. So in case of square close packing, what is the packing fraction? Put it 1 into pi r square. Total 1 spheres. Pi r square is the area divided by a square. And here you can see very clearly a is equal to 2r. So here is the pi r square over 2r square. And ultimately you get pi by 4. Is the packing fraction, the square close packing. Similarly, in the hexagonal close packing, find out the number of spheres in one hexagon. अगर आप वन हेक्सागन की बात करोगे बेटा, तो इसके कॉर्नर का 1/3 पार्ट शेयर हो रहा है, 6 है, 6 into 1/3 2 और 1 सेंटर में 3. पैकिंग फ्रैक्शन इन दिस केस 3 into pi r square. This is the total area covered by the spheres in 1 unit, 1 hexagon unit, divided by the area. Area of hexagon is basically area of 6 equilateral triangles. So it is the 6 into root 3/4 area of the triangle a square, मतलब 2r square. ठीक है. अगर आप इसे सॉल्व करोगे then you get the packing fraction in the 2D hexagonal close packing. But remember, 2D hexagonal close packing or 2D square close packing, the packing fraction can be asked only in objective. Otherwise you have to explain what is the one dimensional close packing, what is the two dimensional close packing, 2D square close packing, 2D hexagonal close packing, type of voids, triangular voids, type of voids, square voids, coordination number in this case 4, coordination number in this case 6. It is also known as AB type packing. It is also known as AAA type packing. And 2D hexagonal close packing is more efficient than 2D square close packing. Okay. Now what about the 3D close packing? From 2D close packing we will discuss in the next video. Till then watch the video, and if you have any doubt then please ask by call or message. Okay, and wait for the next video, which is very important, explanation of 3D close packing from 2D close packing. Okay, thank you, thanks a lot.